जुलाई की 3 wait a minute, yes, जुलाई में 3 phases हो 3 days में first phase हो चुका था, right? So we have taken the feedback from the students. How was the paper? Okay, what was some minor changes are there? हर time होता ही है कि UGC एक pattern follow करता है, कुछ minor changes करता है, right? So जो हमारा experience था, जो students का experience था, उसी के basis पे हमने ये new questions बनाए हैं. Okay. So along with these questions we will also tell you कि कौन से questions जो है वो आप उसके बारे में भी ज्यादा पढ़िए, right? कौन से topics के बारे में, right? चलिए. So I hope मेरी first question visible है. Right. So see, अभी जो आपके क्वेश्चंस आए थे ये सारे के सारे नेट के, वो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? यहाँ आपसे क्या एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, रटा नहीं मारो. सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा, चीजों को एक एक को समझना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे ये जैसे देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट 2 जैसे आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले तो क्या होता है, राइट? उसके बाद ही यू विल बी एबल टू टेल कि whether this statement is correct or not. So you have already read about formative assessment, normative assessment, right? For this summative assessment you have already read about it. So now you will know, you will give the answer that whether this statement is correct or not. ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है? इसमें मुझे नहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. यू ओनली हैव टू यूज सम कॉमन सेंस, राइट? तो चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, एनीवन? Ma'am, sorry to interrupt. So there is one Right. student, Siri. She is, I guess, from South India. So please deliver the classes in English, okay? Sure, ma'am. Yeah. Not any Okay. problem. Yeah, thank Okay. you. So like I was saying, see, this is a very self-explanatory statement, so you should be able to give the answer whether this statement is correct or not. This statement is based on the formative assessment. So if you know what is the meaning of formative assessment, what it requires, right? Then you would be able to know, you will be able to tell that whether this statement is correct or not. Okay, so your time starts now. Give your answers quickly. Tell me the which option would be the most correct option. Got one answer from Sri. Three, That is ma'am. third Three, option. answer three. Answer three. Right. Okay, so Kavita has given the right answer. Right. So let's see. Wait a minute. Okay. So from here you can see ki this answer is correct because see, teaching drives learning, right? So when you come into this world, okay, you don't know, many of these people, students don't know, okay, children don't know what about. So they learn teaching, okay, they learn through their teachers, their parents. So what is it? Then the primary motive of, or you can say the way, first prime way of teaching, okay, it is always through teaching. And from, okay, when you talk about this assessment part, assessment is always about feedback, right? Why anyone will give you assessment, right? Even your result or even your mark sheet is all about your feedback. Okay, it tells you in which subject you are weak, in which subject you need improvement, in which subject you are best, right? So this statement is wrong and this is true. If anyone have any doubt at any point, they can immediately point it out. Okay, so it would be in a free flow. Okay, chaliye. This question might be difficult if you haven't studied, if you haven't done any research or haven't studied about any research methodology. But for the students of social science like us, it is relatively easy. Okay, so give your try.
So what they are asking is, they are asking which of the following software can be used to apply Z test. Okay, so it is kind of a test that you had Four, already ma'am. read about. Yes, Answer 4. answer is 4. Okay, anyone else? So you have already read about parametric tests and non-parametric test. Okay, anyone else? Okay, so fourth answer is wrong. The correct answer is 3. correct answer is 3. Okay, so see what it is telling about. It is telling of some test. Okay, so you have to do, for that you have to do data analysis. Okay, and you can see Turnitin. Turnitin is a software that checks plagiarism. Okay, ये भी research में use होता है. This is also used in research, but it is used for to check or to identify how much plagiarism is there, right? So it is not used for any kind of data analysis, right? Then MS Excel is widely used for data analysis, right? अगर तुम्हारे पास कम data है, if you have a small amount of data, you can use MS Excel to do various tests. And PowerPoint पे कोई तरीके का test नहीं होता. It is only for the purpose of presentation, right? And this SPSS is statistical software, and if you have large amount of data, you can use this software. So answer is A and C is the correct answer. Got it? चलिए, ये थोड़ा आपका नया क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट नया है, पर अगर आपने इसको डीपली पढ़ा होगा इस टॉपिक को, तो यू वुड बी एबल टू गिव द आंसर करेक्टली. See, this is not the class to demotivate you, but this is to show you कि now you have to raise your standards higher, right? अभी तक आपको ऐसा लग रहा था हम repeated ही एक की चीज पढ़ रहे हैं, because वो एक टाइम पे यूजीसी एक ही तरीके के क्वेश्चंस वो पूछता है, right? There is somewhat similarity दिख रही थी हमें 2021 में, then 2020 के थोड़े क्वेश्चंस अलग थे, बट देन उनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी. फिर अभी अगर हम 2022 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है, राइट? अब वो थोड़ा ज्यादा और ज्यादा डीपली पूछ रहे हैं. दे आर चेकिंग योर नॉलेज, ठीक है, कि हाउ मच यू कैन, हाउ मच डेप्थ यू हैव. डेप्थ के बारे में वो बात कर रहे हैं. तो फटाफट बताइए क्या है. Five years. 5 years? No, it is a wrong answer. Okay, let's see what is the correct answer. 7. Yes, 7 is the correct answer. Okay, so 7 is the correct answer. So see, what is academic bank of credit? Now you will see, ma'am, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, but ये किसका part है? It comes under what topic? Okay, it comes under NEP. अब ये तो हमने पढ़ा है, right? But क्या है, अब NEP में बहुत सारे, there are many, माइक्रो नहीं कह सकते, small changes are there. Okay, wait a minute. There are many small topics. Okay, what happened in this key, when we focus on the other bigger topics, like we were focusing on कि उन्होंने degrees को बढ़ा दिया. Now from 3 years, now there is 4 years degree, right? So a student can do a degree in 2 years, 3 years, 4 years, according to his choice, right? But then there are other smaller topics, right, such as this academic bank of credit, that जनरली गेट मिस्ड बाय स्टूडेंट्स. बिकॉज क्या होता है, एक तो ये चीज है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, एंड कई बार क्या हो जाता है कि हम जो मेन जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसको हम फोकस करना भूल जाते हैं, राइट? सो इसी वजह से क्या होता है कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए, कुछ आउट ऑफ द पैटर्न ऑफ द यूजीसी आ गया, सो व्हाट हैपेंस, you are not able to give the answer, you get stuck. Okay, so see, academic bank of credit क्या है?
So now you can you have seen ki now UGC has amending many rules regarding the students, right? So now you can do couple of degrees at a time. At that in your time there was only one degree, right? You can do only a single degree at a time. आपको दूसरी डिग्री करनी है तो आपको पहले वो खत्म करनी पड़ेगी, then you can start. But now स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम है, आप चाहे तो अभी जैसे आपने अभी नाउ यू हैव स्टार्टेड लाइक बीसीए स्टार्ट किया आपने, ठीक है, इन 2022 यू स्टार्टेड बीसीए, बट देन इन 2024 यू आर थिंकिंग कि नहीं 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 मुझे चेंज करना है, ठीक है, आई डोंट फाइंड एनी स्कोप इन बीसीए, सो आई माइट स्विच इन अनदर डिग्री, आई माइट गो इनटू बीकॉम, राइट? फिर आपने बीकॉम पढ़ा, बीकॉम क्लियर किया, 3 इयर्स आपने दिए, अगेन यू वांट टू कम बैक, यू कैन से अरे मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो सिर्फ 2 ही साल पढ़े हैं, राइट? तो अभी मैं उसको कंप्लीट कर सकती हूँ, राइट? मुझे वापस 4 साल या 3 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टूडेंट की ईज के लिए है कि अगर बीच में कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ देता है, सो ही कैन कंटिन्यू हिज स्टडीज अप टू 7 इयर्स। 7 इयर्स के अंदर वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकता है, राइट? व्हाट इज इट्स फंक्शन? सी आपके कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट्स होते हैं ओवर द 4 इयर्स और 3 इयर्स का जो आपका टेन्योर होता है, उसमें आपने जितने क्रेडिट्स अर्न कर लिए, सपोज यू अर्न 16 credits and you have to work for another 16 credits. So when the students takes gap after 16 years and then he comes back after some you say 3 years 4 years, तो उसको वापस 32 credits की 32 credits के लिए काम नहीं करना है, he can work for the rest 16 this credits. Okay, चलिए ये थोड़ा सा इजी है, फिर भी देखिए यू कैन सी थोड़ा अंदर से आपको पूछा है, जल्दी बताइए। सी द पैटर्न, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, अब थोड़ा आप कंसेप्ट लेवल पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है? Ma'am, we got the answers on the chat, 5 and 6. Okay, so see, let's see what is the correct answer. So the correct answer is 6. According to Kyoto Protocol, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी ली गई है? 6 ग्रीन हाउस गैसेस ली गई है, राइट? ठीक है। सो दिस माइट टेक द टाइम, तो ले लीजिए अपना पेन और पेपर और इसको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। So this was the exact question that has been asked from UGC this time. So we found that it is little tougher than the rest. Other questions were very easy. इस बार ये नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आए थे, लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन आए थे, राइट? सिंप्लीफिकेशन के भी इजी सम्स थे, टेबल एंड चेयर का भी काफी इजी सम था, बहुत सारे इजी सम्स इस बार पूछे गए थे। दिस वन वाज लिटिल बिट, मुझे लगा जिसका थोड़ा लेवल हाई है, सो आई थॉट we thought that we should give you this question for the practice. Otherwise, the paper was relatively easy for quantitative aptitude and DI, especially for the students of computer application, because you already have a lot of practice in practical field. Okay, so फटाफट से ये solve करिए। Any leads? Any idea? किसी student को idea आया? Does anyone have any idea how to solve this question?
मैम सोल्व हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। हाँ वही जल्दी कीजिए, बिकॉज टाइम लिमिटेड ही होता है। मैम बता दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे तो मैथ सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो मैं आराम से ही सॉल्व कर पाऊंगी। इतनी नहीं नहीं, क्या जल्दबाजी में कीजिए नहीं कीजिए। होगा मुझसे। ओके, हो जाएगा, चलिए इट्स सी। नॉट दैट टफ। हम लोग टाइम और उसको स्पीड को ज्यूम करके कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा मुझे। राइट, ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? टाइम। तो अभी आप सीधे सीधे अगर फॉर्मूला यूज करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है, लेकिन टाइम हमें एग्जैक्ट नहीं पता। हमें ये पता था कि 30 मिनट्स लेट हुआ था फ्लाइट, बट कितना टाइम लगाया हमें उतना वो नहीं पता है। हमें ये बताया था, ये बताया गया है कि पायलट को 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी। Okay, again, I will explain this in short. So we know that the flight was 30 minutes late and it has to cover the distance of 1500 kilometers. So we know the distance. Okay, and we only know that the pilot has to increase the speed by 250 kilometers per hour, right? So now how would we able to calculate the average speed of the flight? Because we don't know the time and we don't know the exact speed. So any idea, any lead? Preeti has said that she will take time. Anyone else? Kavita, Priyanka, you can give your answers. Ma'am, Priyanka has given somehow around 700. So you can explain and we can go ahead to next question. Okay, so 700 is 750 is not a correct answer. See, what is there? So what would be the correct methodology? You have to go from the each questions, right? So if you are saying that 750 kilometer per hour is the answer, right? So what we will do, we will calculate the time based on the speed that is given in the option, right? So what would be the formula? The formula would be distance into time. So 1500 into time is equals to distance upon speed. So 1500 upon 750, right? So if the plane is carrying at the speed of this at the speed of 750, so what would be the how much time would he take? He will take 2 hours, right? But there it is written that he has increased his speed, right? Increase his speed by 250 hours, right? And he was 10 minutes late. So if we will do by this, हमें क्या देखना है? हमें यहाँ देखना है कि 750 में से we have to deduct 250 from the 750. ओके, ये स्पीड में से हमें 250 देखना है, काट के देखना है, एंड हमें देखना है कि डिफरेंस जो है वो 30 मिनट्स का है, दोनों टैली होना चाहिए, राइट? सो इफ आई एम डिडक्टिंग 250 फ्रॉम द 750, सो क्या आएगा आंसर? So the answer would be 3 hours. So what is the difference? 1 hour का difference है, right? 1 hour का difference है. हमें कितना बताना है? हमें 30 minutes का बताना है, because फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या किया था, पायलट ने क्या किया था, 30 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड बढ़ाई थी, राइट? सो नाउ वी विल सी दिस आंसर, ठीक है? तो 1500 अपॉन 1000 will give you 1.5 hours, right? And इसी में से हम अगर 250 काट देते हैं तो हमें कितना मिलता है? If we will do it by deducting 250, तो हमें 750 मिलेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, तो वो कितना था? 2 hours था। सो यू कैन सी दोनों के बीच में जो टाइमिंग रहता है वो कितने टाइम का रहता है? 30 मिनट्स का रहता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1000 किलोमीटर पर आवर। Got it? Should I explain again? यस मैम, मुझे नहीं आया समझ। See, 750 के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? तो 750 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसने 2 घंटे लगाए थे फ्लाइट को पहुंचाने में, राइट? पर हमें इधर बताया गया कि उस फ्लाइट अटेंडेंट को 250 किलोमीटर पर आवर
स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 30 मिनट्स का जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए, राइट। तो अगर हम इसमें से 750 में से 250 काटते हैं तो हमें कितना आवर्स मिल रहे हैं? 3 आवर्स मिल रहे हैं, राइट। और अगर 3 आवर्स अगर मिल रहे हैं तो हमारे बीच में ये जो टाइम था इसके बीच में ये जो समय बच रहा है वो कितने का बच रहा है? 1 आवर का बच रहा है, राइट। यानी ये जो टाइम है हमारा टैली नहीं हो रहा है इससे। गेटिंग इट प्रीति? यस मैम। नहीं, फिर से समझाऊं? मैम एक्चुअली इट इज आस्किंग अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये हमें यहाँ मिल गई, एवरेज स्पीड वी गॉट इट, बट वी हैव टू जस्टिफाई, राइट। ये क्वेश्चन अगर हम एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब व्हेन वी विल बी एबल टू जस्टिफाई हाउ द फ्लाइट why the flight was 30 minutes late, okay, and why he has to यस increase मैम। the speed by 250 kilometer per hour, यस मैम। right? Why would he have done it? Because क्या रहा होगा इस चीज में? ये रहा होगा कि जो टाइम उनको कवर करना था आधे घंटे का, वो उन्होंने उतने ही स्पीड में किया, 250 किलोमीटर पर स्पीड में किया। ओके, सो प्रीति, आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर पार्ट ऑल्सो। ओके, हम दूसरे क्वेश्चंस पे जल्दी ओके से मैम। जाते हैं। ओके मैम। ओके। चलिए फटाफट बता दीजिए। You have 10 seconds to answer. 1, ma'am. No, 1 is the wrong answer. The correct answer is 3. Okay, so what is the full form of Modular Moodle? objective oriented dynamic learning Dynamic environment. learning environment. So it is very confusing in the part of digital and dynamic, right? So ये चीज याद रखना। ICT में हमेशा full forms पूछे जाते हैं। तीनों दिन में 6 के 6 शिफ्ट में एक full form पूछा ही गया है, so उस पे अच्छे से ध्यान रखिए। लॉजिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत इजी था, ठीक है। सो अर्थपति। राइट, वेरी गुड। ओके, जब पोस्टुलेशन की बात आती है, इम्प्लीकेशन की बात आती है, तो हम अर्थपति ही कोई क्लिक करते हैं, राइट। सीक्वेंस जो है जो 5 टाइप्स के 5 सीक्वेंसेस थे, 5 स्टेजेस के, राइट। तो जो हम अनुमान में पढ़ते हैं वो पढ़ के जाना, उपन्या, उपमान, वो सब वो पढ़ के जाना, वो हमेशा ही पूछा जाता है, राइट। अनुमान अच्छे से पढ़ के जाना, उसके टाइप्स, व्याप्ति वो पढ़ के जाना, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसमें से पूछा जाए, बिकॉज हर साल उसी में से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आईसीटी का ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, फटाफट बताइए। सी है। यस, A and C. A and C. You are saying A and C. No, A and C is the wrong answer. Okay, so this camouflage is done in Trojan horse. Sorry. A and D. This is salami. Yes, worm is this. It is a standalone malware system, and it uses a computer network to spread itself. Right? Why it is considered worm? Because it has properties similar to the earthworm. Right? It will sneak into your house, and you won't know that what is happening in our house. That's why it is. Its quality is similar to earthworm, so that is why it is given the name computer worm. Okay. Like I have said, ki in environment, you have to be aware about some current affairs, right? So it is related to current. If you have a good knowledge of your current affairs, then you would be able to give this answer very easily. Quickly, quick. सी, गोवर्धन की बात की गई है, राइट। तो गोवर्धन कहीं ना कहीं क्या है, किससे कनेक्टेड है? सो ये फार्मर्स से कनेक्टेड है, यू कैन सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। तो गोवर्धन में जो प्रॉपर्टीज, ये ACD यू आर सेइंग, ओके। सो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो गोवर्धन जो स्कीम है वो ही किसके लिए बनाई गई है? वो इसके लिए बनाई गई है
कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस में बनाए, राइट। सो गोबर में रहता क्या है, बायोगैस ही रहता है, राइट। उसको जलाने से यही प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स द रीजन उसको इससे कनेक्ट किया गया है। सो सी वुड बी द ट्रू आंसर। सो इनकरेक्ट आंसर्स क्या है, व्हाट आर द इनकरेक्ट आंसर? इनकरेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड अरे डी। उसने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, इनकरेक्ट। ओके, मैंने करेक्ट बट right. So you have to be very careful when answering the question whether it is asked true यस or not मैम, true. ठीक है। यस यस। So what is NSQF? First you have to identify this, right? ये these questions are little ambiguous, and it is favorite question of UGC because it's like it likes to confuse the students, right? So I would say it is kind of tough question, okay, but these questions carry only 2 or 4 marks, so no need to worry that much, but then you should clear the concepts as much as you can. बट मैम ये बहुत ज्यादा वाइड है, वो रहेगा इतनी ही, these स्कीम्स are the और इतना questions, let the ज्यादा है answer पीडी में और हाँ। हायर एजुकेशन में, इतनी ज्यादा स्कीम्स और ऐसे इतना पजलिंग हो रहा है लास्ट टाइम पे, तो ना पॉसिबल ही नहीं हो So पाता एक don't take the जितने tension, क्वेश्चन। okay, we will come to it, we will come to your doubt, Preeti, right? पहले हम ये finish कर देते हैं, फिर we will come to this. Okay, so the correct answer is C. जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये नेशनल स्किल, this is national है level skill स्टैटिस्टिकल आई qualification गेस। framework. Yes. नो मैम। Okay, so you can see the way the level is increasing, that responsibilities are also increasing. Okay. This is very easy. I don't think you will need any guidance again, but then UGC asked the questions on that. I hope you have done enough practice on that. अगर नहीं किया है, अभी भी करो। Do it quick. मैम ए एंड डी ओनली। A and D only. Yes, it is. It should be undetermined, right? Okay, it is correct. आपने इतना अच्छा पढ़ाया था ना लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद से मेरा बहुत अच्छा हो गया ये। चलिए चलिए बढ़िया, फटाफट से ये सॉल्व कीजिए। Only 3 minutes are left and you have to solve 4 questions. This is very easy question. All. ABCD. Yes, all would be the correct answer. See, all the Yes, metals that ABCD. has been given, these all are pollutants. Quick. सेंसरी मोटर। Let's see. Very good. Stages पढ़ के जाना, जो भी theories, whatever the theories are given in teaching aptitude, read it all. कुछ भी question उसमें से आ सकता है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें, फटाफट से बताइए। Written communication. Okay, very good. Written communication is the correct answer. Now last 10 seconds only. Quota. Yes, C इसमें B and C. बी एंड डी। B and C is the correct answer. Okay,
Stratified sampling and systematic sampling, random samplings होते हैं, probability sampling होते हैं, and purpose है when quota में you don't use probability or you don't use random sampling. Okay, only 1 minute is left. So should we come to Google Meet to discuss your doubts? Yes, ma'am. मैम तो मुझे 750 आया, आपको 1000 आया, वो आंसर आप बताइए हाँ, कैसे आया? I will explain. Just 1 second. So we are dear students. So already I have posted this in the group. So this was some of the expected question for an examination. Why we have taken this session, so that you will get an overview. In the July, they have asked such type of questions. So out of all the questions, you can see all are the previous year question. And yes, you will get some of the lengthy questions in mathematical reasoning or DI. So if you know the question is very lengthy, skip that question in the examination, because you cannot waste your time in